Good evening, students. I am Abhishek, and today we are going to study about what is Archimedes Principle. All right, what is Archimedes Principle? Now, uh, the Archimedes Principle this topic is for class 9th. Okay, and today we are simply learning this topic. First topic is define Archimedes Principle. Second, I will explain about Buoyant force. और हम थर्ड टॉपिक में हम जानेंगे व्हाट इज weight loss of an object in liquid. Okay, and fourth, we'll study apply principle of the principle of floating and sinking bodies, right? And the five is relating the concepts of daily life examples. Okay, friends. So we simply move on the first topic. Um, First of all, have you ever noticed a stone sink in water but of ship floats? So today we are going to learn a very important principle of physics that explains this behavior. This principle was discovered by a famous scientist named Archimedes. Okay, so what is the principle of Archimedes? Principle is saying the first is define. How you will define the Archimedes principle? Archimedes principle. Okay. So when a body, the simple definition is when a body is immersed, when a body is immersed partially or partially, one second, partially or completely in fluid, it experiences an upward force equal to the weight of the fluid displaced by it. This is the simple definition of Archimedes principle. When a body is immersed partially or completely in a fluid, it experiences an upward force equal to the weight of the fluid displaced by it. What is it is means? It means upward force. Upward force is called buoyant force or upthrust. Okay, first thing. Second thing, what it is saying, it is saying this force acts opposite to gravity. Okay, and what is the third point is saying? All fluids means all fluids, liquids, and gases. All it it applies on all fluids, liquids, and gases. Okay, remember it. नाउ सिंपली अब मैं एक बार इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है फिर से एक बार जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड लिक्विड या गैस में पार्शियली या कंप्लीटली इमर्स्ड होती है तो उस बॉडी पर एक अपवर्ड फोर्स लगती है जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होती है अगर मैं सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ मैं ऑब्जेक्ट जितना पानी में होता है उतने पानी के वेट के बराबर उस पर ऊपर की फोर्स लगती है सिंपली इसलिए हम इसको अपवर्ड फोर्स को हम बियॉन्ड फोर्स या अपथ्रस्ट भी बोलते हैं ये फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगती है ग्रेविटी इसके अपोजिट में काम करती है एंड वन मोर एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज लिक्विड एंड गैसेस दोनों में काम
कर दिया है ये। ओके, नाउ the next topic is uh, how you can explain all the things mathematically। जैसे कि आपने बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा। बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला जो होता है, इट इज B इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू ग्रेविटी। ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑफ अ ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, इसमें V होता है हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ओके, एंड हमारा रो होता है क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड G होता है हमारा ग्रेविटी। राइट, तो सिंपली इसको याद रखना, इट इज important thing। Okay, now come on the next page। We go on the next page and have you ever heard about one more thing, apparent weight। apparent weight के बारे में भी आपने सुना होगा। apparent weight बेसिकली क्या होता है, इसका सिंपली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हम इसको लिखते हैं, when an object is immersed in water it appears lighter। okay, this reduced weight is called apparent weight। The simple formula of apparent weight is apparent weight equal actual weight minus beyond force। okay, this is the formula of apparent weight। now there is one more topic is floating bodies। floating bodies के बारे में ही आपने सुना होगा। if a body floats in a liquid, or you can say a floating body displaces a fluid equal to its own weight। this is a key exam line, so you can write the principle of flotation is a floating body displaces a fluid equal to its own weight। okay, Archimedes principle is not only theoretical but also very practical। just for example, ships floating on water, submarines, life jacket, hot air balloons, hydrometers, these are the daily life applications of Archimedes principle। एक बार मैं इसको हिंदी में भी सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि क्या है कि सारी चीजें। तो अभी मैंने जो टॉपिक बताया था अपेरेंट वेट के बारे में, पहले हम बात करते हैं। अपेरेंट वेट क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट पानी में होता है तो हल्का लगता है, इस हल्के वेट को हम अपेरेंट वेट बोलते हैं। और सिंपली अपेरेंट वेट निकालने का फॉर्मूला है क्या, अपेरेंट वेट इक्वल एक्चुअल वेट माइनस बियॉन्ड फोर्स। अभी फ्लोटिंग बॉडीज के बारे में बताया था, इसको आप ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है, ये आप ही मान लीजिए कोई भी एक एक्स पर्सन है, एक बॉडी है, अगर ये पानी के अंदर अगर ये फ्लोट करती है, पानी में फ्लोट करती है, तो इसका मतलब है कि बियॉन्ड फोर्स इसके उसके वेट के बराबर हो जाती है। ओके, सो फ्लोटिंग बॉडी उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस करती है जितना उसका अपना वेट होता है। रिमेंबर इट। ओके, so this is the complete concepts of Archimedes principle। I hope you guys like my video। if you like my video, please like, share and subscribe my channel, and thank you for watching my video। Bye।